Good morning, children. Today, let's continue chapter 7, Mullah Nasreddin and the nail. Children, this is the third part of this chapter, and we have already discussed two parts of this chapter. So now, let's come. He slammed the door behind the departing pilgrim and hoped his wife wouldn't be too angry. A week later, Mullah Nasreddin returned and walked towards the nail. Before turning to leave, he took off his coat and hung it on the nail, along with the hat and the scarf. Means after a few days, Mullah Nasreddin came again to the house and he hung his coat on that nail, okay, along with the scarf and his turban. Okay, the wife was furious and she upbraided her husband. Now look what he's done. He's taking advantage of our kindness, no advantage of your weakness. So children, now his wife became angry and she said, now can you look this what he has been doing. He is taking advantage of our kindness. What can I do? The unhappy husband chewed at the ragged end of his mustache. Then her husband says, what can I do? लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? The unhappy husband chewed at the ragged end of his mustache. We agreed that he can do whatever he wants with his nail. They had already had an agreement, and they agreed that if Mullah Nasreddin wants to do anything with his nail, he can do. So he said that what can I do, because we have already signed this, we have already have this type of conditions. Okay, तो वो कहता है मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इस प्रकार का एग्रीमेंट कर रखा है कि अपने नेल से अगर वो कुछ करना चाहे तो उसके साथ में कर सकता है. ओके, सो द नेक्स्ट डे Mullah Nasreddin showed up again. The man tried to shut the door in his face when he saw who it was, but Nasreddin had already placed his foot inside. Means next day Mullah Nasreddin came again, and when he opens the door, then he thinks maybe somewhere here, but after opening the door, just then Mullah Nasreddin already had put his feet inside the house. So nothing was going to stop him from worshipping his nail. लेकिन अब पता है, अब वो मुल्ला नसरुद्दीन अचानक से आता है फिर से, और वो जैसे ही गेट खोलता है उसका जो हाउस ले रखा होता है उसके नाइवर ने, तो बिना पूछे ही अब की बार वो अपना जो फीट है, अपना पैर जो है वो अंदर कर रख देता है, यानी हाउस के अंदर, गेट के अंदर. तो उसे लगता है कि अब इसको कौन रोक पाएगा अपने नेल के साथ, इस जो वर्शिप कर रहा है नेल की, तो उसको करने से कोई नहीं रोक सकता. ओ गॉड, यू अगेन, आई डू होप दिस इज़ द लास्ट टाइम. ही टग्ड एट द हेयर ऑन हिज अपर लिप. पॉजिटिवली रिप्लाइड नसरुद्दीन विद हिज यूजुअल विनाइन स्माइल. वो सोचता है कि शायद ओ गॉड, हो सकता है कि ये लास्ट चांस हो सकता है अब की बार ऐसा ना हो. देन Possibly replied Nasruddin with his usual benign smile. He entered, dragging behind him a sack full of cow dung. तो अब की बार जब वो आता है तो एक सैक लेके आता है. सैक मीन्स थैला लेके आता है, और उसमें क्या होता है, काव डंग होता है, मीन्स उसमें गोबर भरा हुआ होता है. ओके, ही प्रोसीडेड टू हैंग इट ऑन हिज नेल. और उसको क्या करता है, वो उसी नेल पे उसको हैंग करने वाला होता है. ओके, द वाइफ वेंट रेड विद रेज. इसको देख के उसकी जो वाइफ होती है उसके नाइवर की, जिसने हाउस ले रखा होता है, तो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है वो इस चीज़ को देख के कि ये सब क्या हो रहा है.
एंड स्क्रीम्ड एट हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि ये सब क्या करा रहे हो तुम, है ना। गेट दैट आउट ऑफ माई हाउस और आई एम लिविंग यू, या तो इसको घर से बाहर निकाल दो वरना मैं ही इसको छोड़ के घर को जा रही हूँ, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। द हस्बैंड प्रोटेस्टेड vehemently, मुल्ला नसरुद्दीन दिस इज़ गोइंग टू फार, तो वो कहता है कि यार मुल्ला नसरुद्दीन ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते आप, दिस गोइंग टू फार वी कैन नॉट हैव दैट, वो कहता है ये सब तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं अब इस सब को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये गलत कर रहे हो आप। बट यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट गुड नाइबर, तो कहता है लेकिन मेरे प्यारे पड़ोसी, आपने तो इस प्रकार का एक साइन किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था हम लोगों ने। वी वेल वी विल सी अबाउट दैट, लेट्स हैव अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स मेक अ रूलिंग। सून एन असेंबली ऑफ all the wise men of the blaze had been convened,